everyone, welcome back to Radhika classes. Today we are going to discuss a very interesting and important topic that is honey bees. आज हम बात करेंगे honey bees के बारे में, honey bees का social behavior, उनकी sex determination and the applications of the honey bee. So बच्चे हम start करते हैं social behavior of a honey bee. एक bee hive में, honey bee की colony में, bee hive में हमें 3 types of bees नजर आएंगी. One is क्वीन बी. एक हनी बी बी हिव में ओनली देयर इज वन क्वीन बी. क्वीन बी इज अ फीमेल एंड इट फीड्स ऑन अ रॉयल जेली. ये रॉयल जेली पे फीड करती है. इसका मेन पर्पस क्या है? रिप्रोडक्शन करना. एंड गोज नुपिताल फ्लाइट मीन्स ये अपने बी हिव से बाहर जाती है, टेक अ फ्लाइट टू गेट फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइजेशन के लिए, एंड दैट फ्लाइट इज कॉल्ड नुपिताल फ्लाइट. And it secretes pheromones. It secretes some pheromones जिससे ये worker honey bees पे dominate कर सकती है. Inhibits the worker honey bees and releases pheromones for the sexual reproduction, or we can say fertilization. And another is a worker honey bees. They are again the females, but these females are fertile. They cannot reproduce. There are thousands of worker honey bee in a one colony, that is one bee hive, and they feed on the larva. They feed the larva so that they become adult. They collect pollen, nectar, and produces wax. Also means they do the work of the bee hive colony. एक bee hive में जो worker honey bees है वही बहुत important है, वो काम करे, but they cannot reproduce. They feed on larva, collect pollen and nectar, produces wax, and even जो honey bee comb की production है वो कौन कर रहा है? These building combs is done by the worker honey bees, and they instead of feeding larva and the pollen, they form honey bee comb also. Okay, drones. These are males produced by the parthenogenesis. अभी हम next part में बात करेंगे. These males mate with the queen and then die. After mating with the queen, they die. And there is a one fact: drones never mate with the queen of their own colony. They always mate with the queen of some other colony. That's why they take flight. Queen take a flight to fertilize with the drones of some other colony of a drones. Okay, and these are the three members that are present in a honey bee colony. In a one bee hive, only one queen is there. Thousands of worker honey bees are there. These are also female, but they cannot reproduce, and they are the most important members of the bee hive because सारा काम वही कर रही है. लार्वा को फीड कर रही है, नेक्टर कलेक्ट कर रही है, वैक्स प्रोड्यूस कर रही है, हनी बी, एंड दे एक्ट एज अ बॉडीगार्ड आल्सो, प्रोटेक्ट्स द बी हिव आल्सो. ड्रोन्स, दीज आर मेल्स प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस, एंड देयर ओनली वर्क इज टू मेट विद अ फीमेल. नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन. Sex determination in honeybees follow haplodiploidy pattern or known as parthenogenesis. Parthenogenesis को समझते हैं पहले. Parthenogenesis क्या है? When an individual produces without fertilization, उसमें बिना fertilization के produce हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? Parthenogenesis. And honeybees shows parthenogenesis. देखो बच्चे, ये queen है, queen with a diploid set of chromosome. For the sexual reproduction meiosis हुई, they become monoploid, haploid हो गए, single set of chromosome. अगर वो single set of chromosome unfertilized egg adult में change हो रहा है, that is drone. Means ये क्या हो रहा है? Chromosome number reduces to half. यहाँ queen के पास क्या था? Diploid set, that is 32 chromosome, and the drone, that male, it is fertile, has only 16 chromosome because it produced by the parthenogenesis. Here, when drones are produced, parthenogenesis occur. And if this after meiosis, the gamete produced is fertilized with the drone, that male, they fertilize with the male, तो उसके बाद वो डिपेंड करता है. अब जब वो फीमेल बन रही है तो वो फीमेल कौन सी फीमेल होगी? दो फीमेल्स है, क्वीन एंड वर्कर फीमेल्स, फीमेल बीज. सो इफ दैट फीमेल प्रोड्यूस्ड is feeded on a royal jelly. If not feeded on a royal jelly, उसको royal jelly पे feed नहीं किया जा रहा है, feed कौन करेगा? The existing worker bees. Then it produces worker. They are fertile female. They are not capable to reproduce. If feeded on a royal jelly, see, if feeded on a royal jelly, then it become queen. And that queen is fertile. उसका main काम क्या है? Fertilization करना through nupital flight and releases pheromones to inhibit the workers, to dominate over the workers, and releases pheromones
for the mating also. तो ये जो बच्चे कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज दैट फॉलोज इन मेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद पार्थिनोजेनेसिस. तो आप ये कह सकते हैं ये जो मेल प्रोड्यूस हुआ है इसका कोई फादर नहीं है और ना ही इसका कोई सन हो सकता है, बिकॉज इट हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम. With that X chromosome from the drone fertilized either produces worker female or a queen female bee. So in the family of the honey bees, a male do not have father or son but have grandfather or grandson. Grandfather और grandson हो सकता है but father और son नहीं होगा एक male का. This is just because of parthenogenesis. Next, applications of honey bees. So all of you knows honey bees produces honey, and this honey is very important as it is a very good probiotic source of protein and it has a many medicinal values also, and these are best pollinators. Approximately 90% of the plants are pollinated by the honey bees, so they are very good pollinators. They are very required. अगर आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स देखने हैं, फ्रूट प्रोडक्ट्स चाहिए तो these must be present. अगर बी हीव्स नहीं होंगे, हनी बीज नहीं होंगी तो पॉलिनेशन नहीं होगी. और पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? These worker honey bees, because they are collecting pollen, nectar. यही कलेक्ट करेंगे pollen और nectar, और इस pollen nectar को ये रॉयल जेली में कन्वर्ट करती है to feed the queen. अब अगर किसी बी हीव में ओनली वन क्वीन इज देयर और वो वन क्वीन फेरोमोन्स रिलीज करके इन पे डोमिनेट कर रही है, अगर कोई क्वीन हनी बी सिक है, बीमार है, तो उसका जो प्रोडक्शन ऑफ फेरोमोन्स है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एंड व्हेन डाइज द फेरोमोन्स कंप्लीटली नो रिलीज ऑफ फेरोमोन्स, उस टाइम पे फिर ये वर्कर हनी बीज जो है दे स्टार्टेड फीडिंग अ लार्वा विद अ रॉयल जेली. वन ऑफ द जो बी हीव में बहुत सारे लार्वास हैं हनी बीज के, उन पे फीड उनको रॉयल जेली फीड करेंगी और रॉयल जेली फीड करके वन मोर क्वीन हनी बी इज प्रोड्यूस. एक बी हीव में सिर्फ एक ही क्वीन हो सकती है. इफ मोर देन वन क्वीन आर प्रोड्यूस्ड इन अ वन बी हीव देन दे compete with each other and only one will survive, other will die in a competition. These are the some facts of honey bees. First is to communicate with other honey bees when they are going for the collection of pollen and the nectar. These worker honey bees generally interact with each other through a special dance. They move in a special form that is known as honey bee dance. That is a mode of communication for the honey bees. They only sting to protect themselves. Generally किसी को harm नहीं कर रही है. The sting of honey bees contain methanoic acid and they only sting if they want to protect themselves, and only female honey bee stings. Drones never sting. Their only work is to mate with female. They never collect pollen and even not sting. And only female honey bees sting, and the sting of worker honey bee is more potent than the queen honey bee, because queen honey bee generally do not come out of the bee hive. It comes out of her bee hive generally only for the nuptial flight to get mate. Otherwise, these worker honey bees come out of the bee hive to collect pollen and do the pollination. Only one queen can survive in a bee hive, as only they feed when the worker honey bees feed on the larva. Feed the larva with the royal jelly they produce, only then queen is produced. And if in a honey bee more than one queen is produced, then they compete with each other and only one will survive. So this is a very important concept जो आज हमने डिस्कस किया. Honey bees, their social behavior and their reproduction and the application, सभी में एक अलग concept है. Social behavior, there are 3 types of honeybees in a society. Then sex determination, they follow the parthenogenesis. Males are haploid while females are diploid. And then applications, they are very rich source of protein and they have large number of medicinal